Good evening, everyone. चलो very good evening. कुआडे गला समस्त जल्दी जल्दी मत आस क्लास टी को स्टार्ट करिवा मते कहि दियो साउंड वाउंड वीडियो सब क्लियर ना को जगह असुविधा अछि देन हमें क्लास टी को स्टार्ट करिवा ओके कंफ्यूज रहंदे वेरी गुड इवनिंग तुम नाडा मोर केंटी मने पड़नी माने जस्ट हो मते लागु छी जे नाडा मने पड़ला भलिया निशिकांत आई थिंक निशिकांत बोधे मत तुम नाडा मटे आउ थरे कहबो ओके राजा मैम ए वार टाइम रे भी अरे वार तर चालू हमर कोन गला चलो क्लियर ठीक यस मैम ऑल क्लियर वेरी गुड आउ कौन केमती चली छी मत किसी वार न्यूज दियो कौन चलची कौन नहीं टिके हम डिस्कस कर दा करंट अफेयर्स कौन हैला कौन नहीं तापर हम क्लास टिक स्टार्ट करिया बाकी एटा पेडागोजी क्लास कम करंट अफेयर क्लास अधिक लागिवो क वार थे तुम मानकर कौन रिएक्शन सब कौन चलची कौन नहीं बाकी मो घर तो समस्त पूरा टीवी लगे बसचंती सेपटे ठीक मने अछि ओके ग्रेट माने सेपटे वार थे सेपटे मुआपा पूरा रिमोट भी मोट फपाड़ी मते दे कि कहंता मु जाई कि बंधु फटे दे आसंते पूरा से भला से माती के अछंती ओके चलो ओके समझ जल्दी जल्दी आ जाओ क्लास टू स्टार्ट करी नबा करिया चलो ओके ठीक फर्स्ट क्वेश्चन आंसर कौन हम कहतु हाँ राजा कुह चलो आंसर दियो which of the following best distinguish between learning as a process and learning as an outcome आंको भीतर केउंटा गोटे बेस्ट डिस्टिंग्विश करूची कहा का भीतर learning as a process and learning as an outcome न्यूज वाला को सबू मसला खबर मिलुची अच्छा हेला तो सत कथा जदि भी मसला मिलुनी से जाएंगे मार्केट रो मसला किणी के आनी के गोटे छुंक मारी कहउचंदी ओके देवस्मिता वेरी गुड इवनिंग नहीं जम्मा भूली नहीं मु का अनिशा ओके वेरी गुड इवनिंग ओके ग्रेट चलो आंसर दियो आंसर कौन हम सोनाली वेरी गुड इवनिंग अनिशा जब तमें अच्छा लाइव रे ताले मु चाहू तमें भी आंसर दियो वेल चलो कहला अंक भीतर केउटा बेस्ट डिस्टिंग्विश करूची कहा का भीतर लर्निंग एज ए प्रोसेस और लर्निंग एज एन आउटकम कहि की प्रोसेस कले लर्निंग एज ए प्रोडक्ट कोउटा हबा भीतर प्रोसेस फोकस ऑन असेसमेंट विदाउट आउटकम माने व्हाइल आउटकम कुछ विदाउट व्हाइल आउटकम फोकस ऑन इंस्ट्रक्शन देन कहला प्रोसेस एम्फसाइज the learner's journey while outcome highlight the final knowledge acquired then कहला process is subjective while outcome is very माने always objective प्रोसेस इज टीचर सेंटर्ड आउटकम होची लर्नर सेंटर्ड तले पिला माने आ भीतर मते एप्रोप्रिएट कोटा होची कहला ऑप्शन बी की नुहा ऑप्शन बी की नुहे प्रोसेस ता हमर को एम्फसाइज करची लर्नर जर्नी ऊपर आउटकम कोन गोटे लर्नर नॉलेज कोन रहिला से कोन जिंस तार सब आउटकम आसिला प्रोडक्ट कोन आसिला ता ऊपर अधिक फोकस कला ओके ऑप्शन बी टा हमको ए जगह एप्रोप्रिएट होची ना नहीं बाकी कहला प्रोसेस इज टीचर सेंटर्ड व्हाइल आउटकम इज कोन लर्नर सेंटर्ड कोन त मन को ठीक लागुची दुनिया जानिया को चाहूची ऑप्शन डी टा कोन हमको जगह ठीक लागुची प्रोसेस होची कोन टीचर सेंटर्ड और आउटकम होची लर्नर सेंटर्ड हां कि नहीं मते कमेंट सेक्शन रे जणाओ ओके आगु बढ़िबा द स्टूडेंट कैन करेक्टली रिसाइट द मल्टीप्लिकेशन टेबल जोड़ा कि उसर आउटकम बट स्ट्रगल टू अप्लाई मल्टीप्लिकेशन इन सॉल्विंग वर्ड प्रॉब्लम्स जोड़ा कि प्रोसेस गोटे पिला ओके गोटे पिला जदि माने मल्टीप्लिकेशन टेबल को से माने कोन भल से आंसर देई पारुची ओके बट स्ट्रगल टू अप्लाई मल्टीप्लिकेशन इन सॉल्विंग वर्ड प्रॉब्लम
This scenario highlight a potential disconnect between rote learning and meaningful learning, formative and summative assessment, cognitive and psychomotor domain, teacher made and standardized test. कौन हवा आंसर? अनिशा कहले आंसर है. ओके ठीक अच्छी ग्रेट. चलो निशिकांत ऑप्शन सी हबो. निशिकांत एंड स्वागतिका कॉग्निटिव और साइकोमोटर डोमेन आमे कोन एटा आबाकस कथा कहले ना कोन जो ये वाला जो कैलकुलेशन ए जगह आमे से सब कथा किछि कोन साइकोमोटर वाला ए जगह किछि माने नाही थ्योरी नाही साइकोमोटर वाला जगह किछि. ओके फर्स्ट कहले कि स्टूडेंट कैन करेक्टली रिसाइट द मल्टीप्लिकेशन टेबल माने से पूरा बढ़िया से मन रखी कि आंसर से देई पारुची. ओके तो से जगह रे मु कोन कहि छी चलो तो से जगह मत कौन कहला रोट लर्निंग की नुह देन कौन आसिला बट स्ट्रगल टू अप्लाई मल्टीप्लिकेशन इन सॉल्विंग वर्ड प्रॉब्लम स्ट्रगल करूची. ओके देन से कौन कहबे जगह मोर कौन होची मीनिंगफुल लर्निंग. ऑप्शन ए टी मोर ए जगह कौन होची एप्रोप्रिएट होची ऑप्शन सी नुह कॉग्निटिव और साइकोमोटर वाला कथा नुहे. चलो आगु बढ़िबा. ए की एडवांटेज ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट ओवर ए टीचर मेड टेस्ट इज टिपिकली इट. की एडवांटेज कौन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट ओवर ए टीचर मेड टेस्ट. जदि आमे कहिबा स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट टी हमर कोनटा हमर फ्लेक्सिबल की नुहे टीचर मेड टेस्ट टी हमर फ्लेक्सिबल. स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट पई हम गोटे एक्सपर्टीज को दरकार पड़े कि टीचर मेड टेस्ट हमको दरकार पड़े ही नहीं. ताले हम कोन हबो रोट एंड मीनिंग इज वेरी गुड. ओके चलो सबस कुआर आंसर कोन हबो कहिला ओ शिट आंसर देखाई गला कि आंसर आखि बंद कर दिया आंसर जदि देखाई गला बाय चांस. की एडवांटेज ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट ओवर ए टीचर मेड टेस्ट इज टिपिकली इट्स हायर डिग्री ऑफ कंटेंट वैलिडिटी फॉर ए स्पेसिफिक क्लासरूम. ओके देन कौन कहला ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी इन असेसिंग डाइवर्स लर्निंग स्टाइल एस्टैब्लिशिंग नॉर्म एंड रिलायबिलिटी अक्रॉस ए वाइडर पॉपुलेशन. जदि हमें कहिबा मु फास्ट काली क्लास रे भी कहिदिली त हमर कोन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट कथा आसी ओवर टीचर मेड टेस्ट. देन हमें कौन कहबा से जगह रे कि जो जगह नॉर्म्स टर्म्स एंड कंडीशन वाला जिंस आसला से जगह हमें स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट को संगे संग आखि खोली की अप्लाई मार दबा. स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट ओवर टीचर मेड टेस्ट कथा कहला जगह रे. Always we find this question ma'am. Okay ठीक अच्छी. चलो आगु बढ़िबा. Our stage for evaluating student learning. Okay they often lack objectivity in scoring. They may not adequately reflect the curriculum taught a specific classroom. They are generally easier to administer and interpret. They provide detailed diagnostic information for individual student. कौन होगा आंसर के रे कौन होगा आंसर बफर हो जी पिला माने. ओके बी फॉर बड़ अच्छी तो बी को मारिक चल नाई बी रे बड़ अच्छी बी टा बड़ अच्छी. अच्छा ठीक अच्छी कहला आंक भितर केउटा गोटे प्राइमरी कंसर्न कर रिगार्डिंग द सोल रिलायंस ऑन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट फॉर इवैल्यूएटिंग स्टूडेंट लर्निंग. ओके दे ऑफन लैक ऑफ ऑब्जेक्टिविटी माने कौन बायसनेस वाला कथा आसिला फ्री फ्रॉम बायसनेस. देन कौन आसिला हमर दे मे नॉट adequately reflect curriculum taught in a specific classroom. ओके सब माने क्लासरूम रे जहाँ जहाँ हमर करिकुलम्स वाला हाँ टिके होतला. ओके ठीक अछि किछ नै. ओके चलो तमे क्वेश्चन बुझो फर्स्ट क्वेश्चन कौन कहूची. दे आर जनरली इजियर टू एडमिनिस्टर टू एंड इंटरप्रेट. ऑप्शन सी आउ डी ए जगह आम ये को छाड़ी दबा ए आ बी ऊपर फोकस करबा. दे ऑफन लैक ऑब्जेक्टिविटी इन स्कोरिंग. दे मे नॉट एडिक्वेटली रिफ्लेक्ट द करिकुलम टॉट इन स्पेसिफिक क्लासरूम. अच्छा ठीक अच्छी आमर स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट रे कौन सब प्रकार करिकुलम गुड़ाक ये हुए नी चलो चलो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट रे कौन सब करिकुलम गुड़ाक पूरा परफेक्ट माने जहाँ हमर सिलेबस रहिला एबे तुम मानकर LTR एग्जाम होची. LTR एग्जाम रे धर मु तुम माननको पढ़े नाही माने लर्निंग एज ए प्रोसेस एंड आउटकम ऊपर मु तुम माननको पढ़े नाही त तुम मानकर को सेथिरो क्वेश्चन आसीबनी. ओके देन कौन कहला दे ऑफन लैक ऑब्जेक्टिविटी. जदि माने कौन फ्री फ्रॉम माने बायसनेस रे कौन करूची पळे आसी बाहर को लैक ऑब्जेक्टिविटी. ताले मोर ए जगह आंसर कौन हबो
ऑप्शन बी टा ए जगह एप्रोप्रिएट होची ना ऑप्शन ए टा एप्रोप्रिएट होची कोटा एप्रोप्रिएट मतलब भाबे चिंती कुआ जे फॉर जय जगन्नाथ ओके चलो राधे राधे कोटा हबो को ऑप्शन ए टा ना बी टा फाइनल करी को कोटा हबो आंसर जल्दी जल्दी ना बी रे लॉक करबा आगु को बढ़िबा ना बी रे लॉक करी के आगु को बढ़िबा संगे संग कुह कोडे गलो कि रे sole reliance on standardized test for evaluating student learning b b okay चलो ठीक आगो बढ़िबा an MCQ item task which of the following is not a characteristics of a mammal okay this is an example of anko bhitor quoted MCQ item task which of the following is not a characteristics of mammal anko bhitor keota mammal ro characteristics nu ho eta kahar example habo negative constraint item complex multiple choice item na matching item na positive constraint item चलो बी फॉर बड़ा मैम हाँ ठीक अछि बा माने बुझिली सुंदर छाउडा मोर सब को आंसर कोन हबो आपण को मोक रे खाली बी मारी चलीबार अछि बाकी पास ना 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 जम्मा मो ऊपर भरोसा करिवनी सेमिति भरोसा करिवनी चलो केमिस्ट मुकेश कौनटा आंसर हम हमरो कौनटा आंसर हम एथिरो कॉम्प्लेक्स मल्टीपल चॉइस आइटम एटा बहुत कॉम्प्लेक्स हे गला तुम पई हां एटा कॉम्प्लेक्स की अरे भाई तुम मानु केबे मन एक क्वेश्चन देली धर एटा तुम माने एक क्वेश्चन एटा हो एमसीक्यू क्वेश्चन ओके तुमको आ भीतर कोनटा कॉम्प्लेक्स वाला जिंस अछि कोनटा कॉम्प्लेक्स वाला जिंस अछि नेगेटिव कथा आ भीतर किछि नै व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स कथा कहला आ भीतर केउटा गोटे कैरेक्टरिस्टिक जाटा ऑप्शन देखो ता भीतर तुम गोटा गोटे बाछिलो ओके नेगेटिव कांस्टेंट आइटम कथा से जगह हमर उठु ही नै कॉम्प्लेक्स रहला मैचिंग आइटम नुह देना से हमर पॉजिटिव कांस्टेंट आ कॉम्प्लेक्स मल्टीपल चॉइस आइटम कोनटा आंसर हमर ए होबा नै नेगेटिव होबो केमिति नेगेटिव होबो which of the following is not a characteristics of mammal kahar example C matching item वाह शाबाश मैचिंग आइटम कोडी C हबो नाही रे पिला माने C पदेला मैचिंग आइटम मैचिंग कोटा A B क स्तंभ वाला जिंस सेटा हमर कहि जो मैचिंग टाइप चलो वेरी गुड कौन हम आंसर हमर कॉम्प्लेक्स ना नेगेटिव कांस्टेंट आइटम कॉम्प्लेक्स ना नेगेटिव आइटम 100% मु जानिनी एटा शाबाश ताहाले कौन है आंसर कॉम्प्लेक्स ना नेगेटिव नो साउंड हेलो एबे साउंड आउची साउंड प्रॉब्लम एबे ठीक अछि एबे ठीक अछि एबे चलो ठीक अछि
बुझीबा एबे कोन कहला ए जगह हमु कोन देइची तुमको के कॉम्प्लेक्स आउ नॉट भीतर तमानु टिके कंफ्यूज सृष्टि करिया पई कंफ्यूजन सृष्टि करिया पई टिके बास खाली मोटे चेष्टा थिला एटा हमर कोन हे जिवो नेगेटिव कांस्टेंट आइटम काहे कि ए जगह हमको आखि अगर दे देइची नॉट कथा असला माने मु कोन कहबी नेगेटिव कांस्टेंट आइटम्स ओके कॉम्प्लेक्स नाही पिला माने एटा मु कोन कहबी एटा कॉम्प्लेक्स होची बोली कॉम्प्लेक्स ए जगह रे हबो नाही चलो आगो बढ़िबा जो माने मोर आंसर एटा आंसर देजी डी डी नहीं पिला माने आंसर ए हबो ओके चलो A poorly constructed MCQ include option like always, never and sometime. What is the primary flaw with which option? पिला माने और बहुत सारा क्वेश्चन करियर अछि हमकु टे जेट हे जिबा उड़ी जिबा सीधा टिके मोसो कोप करिवो जो जगह न बुझी पारिबो स्क्रीनशॉट नबो त माने मते टेलीग्राम रे हो न लगे व्हाट्सएप रे हो पचार दबो जदी ए जगह हम रही गला टेलीग्राम रे हो न व्हाट्सएप रे हो पचार दबो हे पर आसिला सन जल्दी को ए poorly constructed MCQ include option like always, never and sometime. What is the primary flaw with such option? They increase the reading difficulty. They often provide clues to the correct answer. They are difficult to score objectively. They do not assess higher order thinking skill. कौन हबा आंसर ए जगह रे मोरा always, never and sometime. B very good शाबाश एटा हमर कोन करे क्लूज प्रोवाइड कर दिए चलो द प्राइमरी पर्पज ऑफ टेस्ट ब्लूप्रिंट इज टू टेस्ट ब्लूप्रिंट रा प्राइमरी पर्पज कोन डिटेल स्कोरिंग की माने स्कोरिंग की प्रोवाइड करबा ना एडिक्वेट कवरेज ऑफ कंटेंट एंड कॉग्निटिव स्किल आ पर फोकस करबा ना प्रोसेस of the test administration को सिंप्लीफाई करबा ना कम्युनिकेट द टेस्ट स्ट्रक्चर टू स्टूडेंट कोन हबा आंसर ए जगह मोर टेस्ट ब्लूप्रिंट रो काम कोन टेस्ट ब्लूप्रिंट रो काम कोन कंटेंट कवरेज की नुआ टेस्ट ब्लूप्रिंट रो काम कंटेंट कवरेज की नुआ पिला माने मोर बुझी हो ना बुझी होनी कंटेंट कवरेज चलो a test blueprint typically specify the time allotted for each section of the test, difficulty level of the individual test item, weightage of different content area and objectivity, and the name of the test develops and their affiliation. कौन टा आंसर हमारा कंटेंट एंड कॉग्निटिव वेरी गुड शाबाश चल आर आंसर कौन हबा हम इधर कौन करे वेटेज दियो प्रोवाइड करे कि नहीं को पार्ट रो केते क्वेश्चन आसीबो एसक्यू रो केते क्वेश्चन आसीबो लॉन्ग क्वेश्चन रो केते आसीबो एमसीक्यू केतेटा आसीबो ओके फिल इन द ब्लैंक्स केतेटा आसीबो को कंटेंट केते प्रकार से वेटेज रखिबो आ ऊपर हमर मेनली फोकस करे कि ब्लूप्रिंट आगु बढ़िबा The principle of discrimination in test construction refer to the ability of the item. The principle of discrimination, gender discrimination in the test construction, gender discrimination हुआ पिला माने, okay? कारण मुझे से वाटा बहुत भल लगे, चलो कुआ. The principle of discrimination in the test construction refer to the ability of an item to be easily understood by all students, differentiated between high achieving and low achieving students, cover a broad range of content free from culture. In first step in constructing a comprehensive achievement test. First step कोटा हबा defining the learner outcome to be assessed, administering a pilot test, writing the test item, developing the scoring rubric. कौन हबा आंसर ए जगह रे मोरा बफर हो जी पिला माने बफर हो जी की ए चलो सबस फास्ट हमें कौन करिबा डिफाइनिंग द लर्निंग आउटकम टू बी असेस्ड ओके हमें कोनटा असेस करिबा को चाहू जो पिला मानक भीतर आगे सेटा डिसाइड करो ओके हमें कोनटा असेस करिया पे चाहू जो ता परे हमें आगु को बढ़िबा ठीक अछि Which of the
following best distinguish between learning as a process and learning as an outcome. Learning process focus on observable change in behavior, while learning as an outcome emphasize in internal cognitive changes. Internal cognitive changes ऊपर हमर किए focus करे outcome टा. Learning as a process about how knowledge is acquired. Okay. While learning as an outcome is about what knowledge is acquired. Learning as a process कौन आमे knowledge को केमिति acquired करिबा ताको आमे product कहिला माने कोन बुझिबा एटा केमिति आमे माने कोन what आमे कोन knowledge acquired करले एटा हो टीचर सेंटर एटा हो हमर लर्नर सेंटर प्रोसेस शॉर्ट टर्म एटा हो हमर लॉन्ग टर्म कोटा हबो आंसर कोटा अप्रोप्रिएट हबो ऑप्शन बी के नुहा आमे कोन लर्निंग एज ए प्रोसेस देखिले माने कोन आमे केमिति नॉलेज को एक्वायर करबा हम केमिति पाठ पढिबा कोन करबा आउटकम माने कोन मु पचारि त माने कोन नॉलेज एक्वायर कला तमे कोन पढिलो कोन नै मु तुम क्वेश्चन करबी तमे आंसर देला माने मु कोन कहबे एटा होची मोर प्रोडक्ट चलो a student consistently use a trial and error approach to solve problem in math. Okay, consistently trial and error theory से apply करी चलची कोन गोटे मैथ प्रॉब्लम को सॉल्व करबा पई थरे भूल करची सिखुची पुनी आउ थरे तार चलेज गोल यात्रा देन कहला कि this predominantly reflect which aspect of learning as an outcome, as a process, as a product, then as a performance. कोन है हमर आंसर वेरी गुड शाबाश एटा मोटे प्रोसेस अंडर रे जीव कि नै जदी से मैथ प्रॉब्लम सॉल्व करे गोटे प्रॉपर आंसर रे आसी पहुंच जाई थांता ताले मु कोन कहि थांती प्रोडक्ट आ आउटकम गोटे जिंस ठीक अछि चलो वेरी गुड आगो बढ़िबा द एबिलिटी टू रिकॉल एंड स्टेट द कैपिटल सिटीज ऑफ ऑल इंडियन स्टेट रिप्रेजेंट प्राइमरीली एबिलिटी टू रिकॉल द स्टेट एंड द कैपिटल सिटीज ओके चलो of all Indian state represent हम कौन करछि process outcome both learning as process and an outcome neither learning as a process nor an outcome कौन हो आंसर ए जगह रे मोर मु रिकॉल करूछि रिकॉल करी कि मो मुहर सब प्रकार आंसर आसी जाई छी ए सिटर कैपिटल एया आर एया ओके देन मोर आंसर कौन होबा आउटकम की नुह आगो बढ़िबा which theoretical perspective most strongly emphasize learning as an active process of constructing meaning. Okay, learning as an active process कहिला माने मु कोन कहिबे constructivism कथा कि नुह active process असला माने मु constructivism कथा कहबी ना नहीं metacognition or learning to learn is best considered as an aspect of learning as an outcome, the product of learning as a process, the assessment of learning. Metacognition is learning to learn is best considered an aspect of konta haba outcome na product of learning na learning as a process konta haba answer pila mane process ki nuha very good sabas konta haba answer amara learning as a process learning to learn mu epan to learn karuji mane mu gote process re padi ji mor kichi product epan to asi nahi okay. A key difference between a standardized test and a teacher-made test lies in key difference between standardized test and teacher-made test. Konta the skill they assess, the format of the question, the purpose of the assessment, the process of their development and administration. Konta amara key difference between standardized and teacher-made test. Konta answer haba very good. कहले द स्किल दे असेस ना कतरे कोनटा स्किल छिटा गोटा हमर बेस्ट डिफरेंस बा की डिफरेंस हम तो कहि परिबा नाही द फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन हम भी आर जो फॉर्मेट थिबो ता फॉर्मेट के चल गइते पर आ फॉर्मेट ता फॉर्मेट भलो होइते पर की डिस्टिंग्विश हम तो कहि परिबा की डिफरेंस हम तो कहि परिबा नाही देन कहला पर्पस ऑफ असेसमेंट दीटांगर पर्पस ए कापिला मानन को असेस करबा ओके देन कहले द प्रोसेस ऑफ देयर डेवलपमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन एटा गोटे हेला लागुची हबे भी ऑप्शन डी टा एवं आगो को बढ़िबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग
ओके चलो ठीक अच्छे ठीक समय पज नहीं जाइए एबे साउंड आस पे मैंने साउंड आस मत जन दिखाँ सांगे सांग मैम से समथिंग ओके 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 ग्रेट चलो स्टार्ट करवा जो अटकी थे पुणी से स्टार्ट करना कौन क्वेश्चन थिला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ यूजिंग स्टैंडर्डाइज टेस्ट यूज करिवार प्राइमरी एडवांटेज कौन आमर आंसर कौन थिला ऑप्शन सी ओके ये गोटे वाइडर पॉपुलेशन में स्टैंडर्डाइज टेस्ट आमर यूज होता है चलो आगु बढ़िया A teacher create quiz to assess student understanding of a recently taught chapter. Okay, this is an example of गोटे teacher गोटे quiz create कले कोथि पई पिला मानकर recent knowledge को assess करिया पे जेमिति मु तम मानकर knowledge को assess करिया को किसी गोटे जिंस करूची ओके क्विज होउची त से प्रकार जिंस को पहला पढुतलो से जे साउंड आस्थला एबे कोन हे गला साउंड अच्छा ठीक अछि एबे साउंड क्लियर तो चलो ठीक 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 आसा आंसर दियो ए टीचर क्रिएट क्विज टू असेस स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिसेंटली टॉट चैप्टर ओके जेमिति आमे कहूछु गोटे क्लास सरला परे परे सांगे संगे तमन किछटा क्वेश्चन पचरा हो जाउची तमनकर मन रहला कि नाही कोन कोन नॉलेज असला कोन एटा हमें कोन पई करूछु स्टैंडर्डाइज एप्टीट्यूड टेस्ट स्टैंडर्डाइज अचीवमेंट स्टैंडर्डाइज डायग्नोस्टिक ना टीचर मेड डायग्नोस्टिक टेस्ट ना टीचर मेड अचीवमेंट टेस्ट कोन है बेटा आंसर हमरो टीचर मेड डायग्नोस्टिक टेस्ट एटा टीचर ही करिवो कोथि पई तमन को डायग्नोस करिया को तमनकर माने जहां भी प्रॉब्लम्स अछि ता जो माने गैप अछि ताको आइडेंटिफाई करी ता ऊपर कोन पुटे चढ़े देबा को ठीक अछि आगो बढ़िबा देन व्हिच एटा आंसर ना ये हबो सी हबो आगो को बढ़िबा व्हिच कैरेक्टरिस्टिक्स इज जनरली मोर एम्फसाइज्ड इन टीचर मेड टेस्ट कंपेयर टू स्टैंडर्ड टेस्ट आंक भितर केउ कैरेक्टरिस्टिक्सटा मोर एम्फसाइज्ड हुए जनरली मोर एम्फसाइज्ड इन टीचर मेड टेस्ट कंपेयर टू स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट कौन अब आंसर हमर content validity related to specific instruction reliability yes very good specific instruction अच्छा मु माने गोल बुलिया पूर्वरु आंसर टी आसी के उंकी मारी जाउची आंक भितरु मोस्ट कोटा एम्फसाइज है टीचर में टेस्ट रे कंपेयर टू स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट कंटेंट वैलिडिटी रिलेटेड टू स्पेसिफिक कंस्ट्रक्शन जो हमर कोन इंस्ट्रक्शन A standardized test with high predictive validity would be most useful for standardized test with high predictive validity would be most useful for कोथि पई diagnosing specific learning difficulties formatively assessing ongoing learning na evaluating the effectiveness of particular teaching method na selecting student for a specific program or course केउथ पे हमर यूज हुए standardized test को पुणे में कोड गटे प्रेडिक्टिव वैलिडिटी पाखर हमटे यूज होला माने मु से जगह कोन कहबी पीजी एग्जाम कथा टिके मने पका पिला माने ए जगह से टिके पीजी एग्जाम कथा मने पकई दियो जोटा हमर प्लेसमेंट वाला जिंस अछि प्लेसमेंट इवैल्यूएशन वाला जो जिंस अछि से जगह रे कोन प्लेसमेंट इवैल्यूएशन कहि परिबो तमर आउ कोन कहि परिबो प्रेडिक्टिव वैलिडिटी कहला माने कोन ए जगह रे मु कोन कहिबी पीजी एग्जाम रे मु 54 रखी बोली घरे आसी ताकू आंसर मारी थी मोर एग्जाम रे भी सेति की आसीला मु कोन कहली मो प्रेडिक्शन पूरा करेक्ट मते मे भी गैस्ट्रो टॉक रे बसिया जरूरी ओके मो प्रेडिक्शन तो ठीक आसी गला ना ताले जगह कोन हबो सिलेक्टिंग स्टूडेंट फॉर ए स्पेसिफिक प्रोग्राम और कोर्स की नुहा पिला माने बुझिएला ऑप्शन डी काहे की हबो चलो बाकी इवैल्यूएट द इफेक्टिवनेस ऑफ पर्टिकुलर टीचिंग मेथड कि दरकार नहीं से जगह हमर प्रेडिक्शन वाला किछि हमर आसे नहीं देन कहिला कि ऑनगोइंग लर्निंग ऑनगोइंग रे मो प्रेडिक्शन ही कोन बसेबी ऑनगोइंग रे मो प्रेडिक्शन ही कोन बसेबी ऑनगोइंग रे मु जहा माने बसेली मु जहा भाबिली मु सेही टाइम तक सेही क्लियर करे देली मु काहे ऑनगोइंग रे प्रेडिक्शन वाला जिंस बसेबी ओके चलो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट आज मु टेस्ट देली आज तुम माने एलटीआर देलो घर को आसिलो स्कोर की चेक कलो कहला कि हाँ मोर रही जाउची भलो मार्क माने मु टीचर खंडे हेबी तमे रिजल्ट आसिला हेलो सरला से जगह रे ए जिंसटी ही हमर कहूची आगु बढ़िया पूर्वरु जो माने एपन बैच पेड बैच रे बसी ना हो नेई ना हो पढ़ा पढ़ी स्टार्ट करी ना हो आउ समय नाही समय वेस्ट करिया पई जल्दी बैच किनो पढ़ा पढ़ी स्टार्ट करो आर्ट्स पीसीएम सीबीजेट तीन टांगर तमानु क्लास से जगह रे मिली जिवो ओके कोड अप्लाई करिया को बिल्कुल भी भूलिबो नाही कोड कोन करे पिला माने ईजेडएसएन
कोड अप्लाई करिया को बिल्कुल भी भूलिब नहीं। बाकी रहला सुपर पैक कथा कोर्स गोटे बैच अनेक ता भितर तुम मिल जाव जहाँ भी कोर्स तुमने चाहूच पढ़ाई धर एठी तुमको पेडागोजी टिके कम लगे आउ गोटे बीएड देखदेल कि ए जगह तुमको धर पीआजेड वाला जिनस मुझे कौन एलटीआर भलसे बुझेनी मे भी मुझे बीएड बुझे से ठीक पड़ेगा देखीदेल नॉलेज बढ़ कि भाई माने असुविधा घाटारे पड़ो ना कौन आम सुपर पैक रे ओके चल बाकी आसला कौन जो मैंने एपर्यंत भी टेलीग्राम चैनल जॉइन है ना जल्दी जल्दी जॉइन हुआ और ना मास्टर रू एम काढ़ी अस्त्र अप्लाई करेंगे ओके कड़े गला पड़े गला संगे संग अरे ओके चलो टेलीग्राम चैनल मन अच्छे तो पेडागोजी बाय सुभस्मिता मैम शक्ति सर आसते कि नाई शक्ति सर आसी नथिले ओके 24/7 यही जगह ही तुम अवेलेबल अच्छे कौटी पेडागोजी बाय सुभस्मिता मैम चैनल ए जगह तुम रात 9टा पर क्विज होउची आउ बाकी मो सहित 24/7 ए जगह तुम जोड़ी रही पार क्वेश्चन जहाँ भी तुम डाउट अच्छे पचार आम ए जगह क्लीयर करवा ओके चलो आ क्लास रिगार्डिंग इनफॉरमेशन पे जॉइन करो ओडिया टीचिंग बाय टेक्स्ट बुक चलो नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रिटिकल कंसीडरेशन व्हेन राइटिंग इफेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आको भीतर केउटा गोटे क्रिटिकल कंसीडरेशन व्हेन आमे कोन करूछु गोटे इफेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस तैयारी करूछु ओके को आंसर कोन हबो मेकिंग द डिस्ट्रैक्शन ऑब्वियसली इनकरेक्ट यूजिंग कॉम्प्लेक्स एंड लेंथी सेंटेंस स्ट्रक्चर एंश्योरिंग ओनली कथा कहला जगह मु उल्टा काटी देबे कि नहीं ओनली टाको ए जगह मुझे काटिदेली फॉलोइंग जे क्रिटिकल है जगह आम कौटी नेगेटिव कथा नहीं तो मुझे ऑप्शन नेगेटिव को भी उड़े देली नेगेटिव भाई बिल्कुल आवश्यक ना मुझे पॉजिटिव पॉजिटिव दरकार बी पॉजिटिव ओके पॉजिटिव दरकार चलो आंसर कौन हम जगह मोर कौन हम आंसर हाँ ठीक बुझा आस कौन कहला मुझे जगह सी ओनली टाक उड़े देली किंतु ए जगह आम क्वेश्चन देखले बुझला टिके भलसे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्रिटिकल कंसीडरेशन व्हेन राइटिंग इफेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्रिटिकल कंसीडरेशन आम कोटा को क्रिटिकली कंसीडर करू ओके कौन आमर कहला मेकिंग द डिस्ट्रैक्टर ऑब्वियसली इनकरेक्ट यूजिंग कॉम्प्लेक्स एंड लेंथी सेंटेंस स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स और लेंथी स्ट्रक्चर सेंटेंस स्ट्रक्चर रखिबा ओके सब बेले आमर एमसीक्यू जेते टेस्ट कंस्ट्रक्शन करंती सेते बेले आमर एमसीक्यू रे फर्स्ट कोन थाए एम्बिग्यूटी बा लेंथी वाला जिंस ता भीतर न पसे पिला मानकर कंफ्यूजन सृष्टि होबा देन आसला कोन इंक्लूडिंग ट्रिक क्वेश्चन टू असेस डीपर अंडरस्टैंडिंग ओके देन आमर सी टा कोन कहला एंश्योरिंग ओनली वन क्लियरली बेस्ड आंसर ओके आमे सिना ए जगह ओनली टा को नेगेटिव कहि काटी देले किंतु पिला माने टिके देखिलो जगह मु जो नेगेटिव भाई कहि उड़े देली से जगह कौन आमर एमसीक्यू माने आगे फास्ट कोटा ऊपर फोकस करिवो कोटा ऊपर फोकस करिवो आगे आंसर ऊपर ही फोकस करिवो तो ए जगह रे आमे टिके माड़ खाई गले पुणी पछकु फेरी आसीबा कौन मैम आपन तो कहले ओनली द नेगेटिव ओनली तो उड़े देबा किंतु ए जगह हमको एमसीक्यू कथा कहिची एमसीक्यू कथा कहिची पुणी क्रिटिकल आंसर कथा कहिची तो हमको ए जगह कौन दरकार गोटे मात्र आंसर ही दरकार ओके चलो तो आंसर कौन हम बाकी ट्रिक क्वेश्चन रखिबो जेंति पिला मानक डीपर अंडरस्टैंडिंग हबो लेंथी सेंटेंस रखिबो छाड़ी दियो ताकू देन कहला कौन ऑब्वियसली इनकरेक्ट हेतिबो जहां भी माने हम कौन डिस्ट्रैक्शन गुडा को भलो भलो रखिबो किंतु जेते बेले आमे कौन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करूचंती आमे सब बेले कौन करूचंती आगे हमर कौन ध्यान रखुचंती गोटिए क्लियरली बेस्ड आंसर जेंति हेतिबो ओके चलो An essay question that asks student to compare and construct two historical event is assessing which cognitive level comparison वाला जिनस आसिला एटा हमर कोन जेमि देबे हमर एनसीईआरटी बहिरु मुगल जो हमर तुगलक एमानकर समस्तकर सब हिस्ट्री उडी गला ओके जो हमर इब्राहिम लोदी ए समस्तकर पूरा हिस्ट्री उडे देले ठीक अछि से जगह रे हमर जेंडर जो हमर कोन फेमिनिज्म वाला जिनस है जो बाकी अलग प्रकार सब जिनस आसिक आड हो गला तो से जो दीटा जिनस को मु कंपेयर कली आगुर कोन थिला एबे कोन अछि ताले मु कोन कर से जगह रे एनालिसिस के नुह
एनालिसिस मु से जगह करूची ना नहीं पिला माने चलो आगो बढ़िबा इन कंस्ट्रक्टिंग ए ट्रू फॉल्स आइटम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड ट्रू फॉल्स आइटम जब आम कंस्ट्रक्ट करूचंती आंको भितर केउ प्रकार जिंस को आम अवॉइड कर दबा ना कहि दे कि उड़े दबा भलो हैला चलो कौन डामर कोटा को आम अवॉइड करबा यूजिंग प्रिसाइज एंड अनएम्बिगुअस लैंग्वेज ठीक अछि देन कहिला हम कोन using on a single important idea okay including negative words such as not or never eta gote kahi ki mate no hela hela laguchi hei bi pare no bi pare कोन अब आंसर then keeping the statement relatively short and concise कोन अब आंसर हमर very good जिते बड़े आमे ट्रू फॉल्स आइटम करूचंदी से जगह रे नॉट नो नेवर ए वाला जिंस को आमे से जगह ऐड करि परिबा नाही बाकी कहला फोकसिंग ऑन ए सिंगल इंपोर्टेंट आइडिया हो ठीक अछि एटा आमे रखि परिबा अनएम्बिगुअस जिंस आको भी आमे ऐड करि परिबा कीपिंग द सेंटेंस रिलेटिवली शॉर्ट और कंसाइज एटा को भी आमे रखि परिबा त आमे कोउटा को अवॉइड करिबा इंक्लूडिंग नेगेटिव वर्ड को आमे कोन करिबा इंक्लूड करिबा नाही आगो बढ़िया 23 ए चलो अवॉइड देछि पिला माने जगह रे अवॉइड देछि कोटा को हमें अवॉइड करिबा ओके फोकसिंग ऑन सिंगल इंपोर्टेंट आइडिया ऊपर फोकस करिबा तमानु कहबे मोटे फिल इन ब्लैंक्स आनिली कि हमर कोनटा देश स्वाधीन केबे हेतिला सेतिरा हमर किछि अलगा प्रकार जिंस ऐड होबो कि तमे कहबो कि 2020 रे हेतिला तार गोटे सिंगल आंसर अछि ना नहीं सिंगल इंपोर्टेंट आइडिया से जगह हमर ऐड होबो कि नहीं फोकसिंग ऑन ए सिंगल इंपोर्टेंट आइडिया चलो आगो बढ़िया मैचिंग एक्सरसाइज इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर असेसिंग हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल द एबिलिटी टू रिकॉल फैक्चुअल इंफॉर्मेशन एंड एसोसिएटेड रिलेटेड कांसेप्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी कैपेसिटी फॉर क्रिएटिव एक्सप्रेशन कौन होबा आंसर मैचिंग एक्सरसाइज इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर असेसिंग कोथ पे हायर थिंकिंग स्किल डेवलप हम हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल डेवलप है कथा आसो माने मु कहिबी से जगह मोर ओपन एंडेड वाला जिनस माने लॉन्ग क्वेश्चन ए प्रकार जिनस ऐसे टाइप क्वेश्चन आसीगला रिकॉल वाला जिनस आसीला माने मु कहि परिबी जे हां मोर ऑप्शन बीटा जगह हेई पारे मोर हेई पारे कोन हबो द एबिलिटी टू रिकॉल फैक्चुअल इंफॉर्मेशन सबस आज समस्त पूरा बढ़िया मूड रे अछ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िबा व्हेन प्रिपेयरिंग शॉर्ट आंसर क्वेश्चन इट इज इंपोर्टेंट तो हम गोटे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन प्रिपेयर करूचंती कोउटा हम पई इंपोर्टेंट हबो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हम प्रिपेयर करूचंती आंको भीतर केउटा इंपोर्टेंट एनकरेज ए वाइड रेंज ऑफ पॉसिबल रिस्पांस फ्रेज ऑफ क्वेश्चन दैट इलिक्ट कोन करबा हमर specific and concise answer make the question open ended short answer question देछि promote critical thinking focus on assessing subjective interpretation कोन अब आंसर ए जगह मोर बहुत ही obvious जिंस कोन अब ए जगह आंसर phrase question that elect specific and concise answer चलो very good open ended कथा असला माने ए जगह मु कोन कहिबी मोर ऐसे टाइप क्वेश्चन ओके शॉर्ट क्वेश्चन है मे बी से 2 3 4 आंकर भीतर ही रह जाई पारे इलेक्ट स्पेसिफिक आउ कोन गोटे कंसाइज आंसर आगो को बढ़ीबा चलो द प्राइमरी पर्पज ऑफ ए टेस्ट ब्लूप्रिंट प्राइमरी पर्पज कोन कहार हमर पर्पज ऑफ ए टेस्ट ब्लूप्रिंट इज टू एंश्योर दैट द टेस्ट एडिक्वेटली सैंपल द कंटेंट एंड कॉग्निटिव स्किल बीइंग असेस्ड ब्लूप्रिंट रे हमें देखिले कि गोटे कंटेंट रो केते वेटेज रहिबो कोन नै शॉर्ट क्वेश्चन केते रहइबो लॉन्ग क्वेश्चन केते रहइबो एमसीक्यू केते रहइबो ए जगह मु ऑप्शन ए को मारी के आगो को बढ़ी बिना बाकी ऑप्शन भी टे पढ़ी देबी पढ़ी दउ थरे ए प्रोवाइड डिटेल स्कोरिंग की हमर ब्लूप्रिंट रा आसे नाही देन कहला आउटलाइन द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर फॉर द टेस्ट कोन प्रोसीजर रहइबो टेस्ट रो ताकू मु आउटलाइन करबी नाही ब्लूप्रिंट रे देन कहला कम्युनिकेट द टेस्ट रिजल्ट टू स्टेक होल्डर जदि मु कहिबी ए जगह मोर ऑप्शन ए टा अप्रोप्रिएट होउची ना नाही बंधु माने मोर वेरी गुड शाबाश आगो बढ़िया द टेस्ट ब्लूप्रिंट टिपिकली इंक्लूड स्पेसिफिकेशन रिगार्डिंग the test blueprint typically includes specification regarding the names of the student taking the test, the time allocated for the each section of the test, distribution question across different content area, cognitive level कथा कहिबा पुनी different content area कथा कहिबा मु पुनी ताको blueprint रे मारिबिनी एमिदी हुए ही नहीं सेटा ही हबो why not be कोउटारे एइटा ना 26 27 ना 26 कोउटारे
27 रे 27 रे बी एथि पई हेई परिबो नै हमर टाइम अलोकेटेड फॉर ई सेक्शन ऑफ द टेस्ट को सेक्शन ने केते टाइम लागिबो एटा भी हमर ब्लूप्रिंट देखे नाही ओके को सेक्शन ने केते टाइम लागिबो सेटा हमर ब्लूप्रिंट देखे नाही ब्लूप्रिंट ते हम कोन देबो से केवल कंटेंट एरिया पर फोकस कर देबो कोथुरु केते क्वेश्चन आसीबो 26 रे प्रोवाइड ए डिटेल्ड स्कोरिंग की ब्लूप्रिंट रे हम ब्लूप्रिंट थोड़ी ना हमर स्कोरिंग की एटा ये करे ब्लूप्रिंट हमर स्कोरिंग की प्रोवाइड करे नाही ओके कारण ब्लूप्रिंट अच्छा ठीक अच्छी तमें चलो टिके सांगे सांग टाइम मेसिन पछकू पळेबा टेस्ट प्रिपरेशन स्टेप्स ऑफ टेस्ट प्रिपरेशन कोन हमर थिला प्लानिंग प्रिपेयरिंग मते गोटे गोटे कहि चलो जदी मने अछि कोन मने पक्काओ प्लानिंग प्रिपेयरिंग ट्राई आउट बोर्ड से ना चलिले ठीक से प्लानिंग प्रिपेयरिंग ट्राई आउट आ गोटे इवैल्यूएशन मने अछि ना नाही पिला माने प्लानिंग प्रिपेयरिंग ट्राई आउट और इवैल्यूएशन हाँ कि नहीं जिते बड़े हमें प्लानिंग कथा कहले प्लानिंग स्टेज रे ही हमर ब्लूप्रिंट प्रिपेयर हुए कि नहीं हमर प्रिपरेशन स्टेज रे स्कोरिंग की कथा आसिला प्रिपरेशन स्टेज रे हमर स्कोरिंग की कथा आसीबो किंतु जिते बड़े हमें कहिबा कोन प्लानिंग कथा प्लानिंग रे ही हमर ब्लूप्रिंट तैयारी हुए ठीक अछि प्रिपेयर हुए नहीं प्रिपरेशन रे हमर हुए नहीं अच्छा तुम कहू ओके ठीक अछि ग्रेट ओके मु भाल तो प्रिपेयर कथा कहू प्लानिंग प्रिपरेशन प्लानिंग प्रिपेयरिंग ट्राई आउट इवैल्यूएशन प्लानिंग रे ही हमर ब्लूप्रिंट हुए कारण मु गोटे घर तैयारी करूची मु प्लानिंग स्टेज रे कोन करी आगे घर गोटे ब्लूप्रिंट बनैबे तापर मु घर केमिति बनै मोर मास्टर बेडरूम कोटा हबो को जगह रे वास्तु देखि कि मु पुनी घर बनैबे ना नहीं फोन तापर आसीबो से वास्तु के घर भांगी गटे तमर ऐशन्य कोन रे ई अछि से कोन रे सी अछि एठी तमर गोटे भूत चाले दौड़ी पळौची राती रे सरला गला से घर भांगिला तो मु फास्ट कौन करी आगे ब्लूप्रिंट पकेली वास्तु डाकिली घरे पानी पानी चिंची तापर घरटा को बनैली ओके तो प्लानिंग रे ही हमर ब्लूप्रिंट वाला जिंस हुए प्रिपेयरिंग रे हमर हुए कोन स्कोरिंग की कथा आगु को बढ़िया ओके दादा आंसर हे गेला सी चलो टेस्ट ब्लूप्रिंट टिपिकली इंक्लूड स्पेसिफिकेशन रिगार्डिंग ए टेस्ट ब्लूप्रिंट टिपिकली इंक्लूड स्पेसिफिकेशन रिगार्डिंग कोन द नेम ऑफ स्टूडेंट टेकिंग द टेस्ट टाइम allocated for each section of the मत केटा लागिला बेला हेला लागुचे एटा रिपीट हे जे पिला माने हे एटा टिके बोते रिपीट हे जे कहला आंसर कोन हबो हां द नेम ऑफ द स्टूडेंट टेकिंग द टेस्ट द टाइम allocated for each section physical arrangement of test item distribution of question across different content एटा हे जी रिपीट हे जी आगो बढ़िया वाह मुझे सीडी बने देलेनी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए की स्टेप ऑफ डेवलपिंग ए टेस्ट ब्लूप्रिंट अंक भितर की स्टेप कोन ब्लूप्रिंट डेवलप करबा को की स्टेप कोन ब्लूप्रिंट डेवलप करबा को एडमिनिस्ट्रिंग ए पायलट वर्जन ऑफ द टेस्ट एनालाइजिंग स्टूडेंट परफॉर्मेंस ऑन ए प्रीवियस असेसमेंट राइटिंग द एक्चुअल टेस्ट आइटम डिफाइनिंग द लर्निंग ऑब्जेक्टिव एंड वेटेज ऑफ द फॉर ईच कोन की स्टेप कोन ऑब्जेक्टिव आ वेटेज हाँ कि ना पिला माने मत कुह डिफाइनिंग द लर्निंग ऑब्जेक्टिव आ कोन हमर वेटेज ऑफ ईच आगो को माडीबा चलो द ब्लूप्रिंट हेल्प इन एनहांसिंग द टेस्ट कोन रिलायबिलिटी वैलिडिटी पर्टिकुलरिटी एंड कंटेंट वैलिडिटी ना किसटा जल्दी कुह किधर गए बच्चे लोग ऑब्जेक्टिविटी पर्टिकुलरिटी सॉरी हां प्रैक्टिकलिटी पर्टिकुलरिटी प्रैक्टिकलिटी कौन हो आंसर हमर ब्लूप्रिंट हेल्प एनहांसिंग द टेस्ट वेरी गुड शाबाश कंटेंट कथा आसीबो मु पुनी ब्लूप्रिंट मानेनी हो नहीं सकता आगु बढ़िया if a significant portion of instructional time was spent on applying specific concept, the test blueprint should ideally reflect this by गोटे significant portion उपरे मु कौन कली गोटे specific concept उपरे मु टिके time देली सुभस्मिता चलो बी content coverage okay ए जगह मोर आंसर कौन अब the test blueprint should ideally reflect this by including fewer question on that concept to overemphasize allocating higher weightage to question assessing the application of that concept placing those question at the beginning of the test काहेकि इसो पई then using only कथा कहला उडा
बाकी हमर ए और बी ऊपर इंक्लूडिंग फ्योर क्वेश्चन कोन भाई मते कम क्वेश्चन रखे एति क्वेश्चन रखे त सेति क्वेश्चन रखिबी बी मारिबी आगु को बढ़ी जीबी हां कि ना हां कि नहीं शाबाश चलो द फर्स्ट क्रूशियल स्टेप इन टेस्ट कंस्ट्रक्शन इज फर्स्ट क्रूशियल स्टेप इन टेस्ट कंस्ट्रक्शन रो फर्स्ट क्रूशियल स्टेप कोन राइटिंग द टेस्ट आइटम ना स्कोरिंग की डेवलप करबा ना पर्पस और ऑब्जेक्टिव ऑफ द टेस्ट डेवलप करबा ना पायलट ग्रुप करबा टेस्ट टू पायलट ग्रुप कौन आमर ऑब्जेक्टिव वेरी गुड फास्ट आमे कौन करबा डिफाइन द ऑब्जेक्टिव आमे कौन पाई कारण किस टेस्ट करिबार ओके चलो which principle is stage in of the test construction emphasize the need for clear and unambiguous language in test item कौन आंसर अब हमरो which principle of test construction emphasize the need for clear and unambiguous language in test item एतरा आंसर सो हे जाउची मु जानि छी फिर भी को कोन अब आंसर आंक भीतर केउटा गोटे प्रिंसिपल कहार टेस्ट कंस्ट्रक्शन एम्फासाइज ऑन द need for clear and unambiguous language in test item clarity validity reliability objectivity clear and unambiguous language और क्लियर आसला माने मु कोन कहबे जगह मोर क्लैरिटी की नुह क्लियर और अनएम्बिगियस लैंग्वेज आसला माने जगह मु क्लैरिटी कहिबी ना नाही वैलिडिटी कहिले माने कोन देखिबी इंटेंट टू मेजर रिलायबिलिटी कंसिस्टेंसी ऑब्जेक्टिविटी ले फ्री फ्रॉम बायसनेस ओके आगु को बढ़िबा ensuring that a test measure what it intend to measure कौन अब आंसर मोर इंटेंट टू मेजर वाला जिंस अछि माने मु कोन कहिबी इंटेंट टू मेजर माने वैलिडिटी की नुह इंटेंट टू मेजर माने मोर वैलिडिटी की नुह रिलायबिलिटी कहले कंसिस्टेंसी आमे देखि नै छु दिनसरा प्रैक्टिकलिटी माने रियल वर्ल्ड कनेक्शन तापर आसिला कोन हमर यूजेबिलिटी माने क्वेश्चन यूज एमती आगु को होउथिबा चलो आगु को बढ़िबा इट इज दैट इट कंसिस्टेंट आसिला माने मु कोन करिवि कंसिस्टेंसी आसिला माने मु रिलायबिलिटी मारिबि ना वैलिडिटी मारिबि हां को मारिबि कंसिस्टेंसी आसिला माने कोन मोर रिलायबिलिटी वैलिडिटी आसिला माने कोन इंटेंट टू मेजर एते थोर मु कहलिनी त माने को मुंडरे पूरा फिट हे जबनी तुम जीवन सारा केबे भूली परिबा नै ऑब्जेक्टिविटी कहला माने हमें कोन कहिबा फ्री फ्रॉम बायसनेस डिस्क्रिमिनेशन एंड इंडेक्स कहला माने हमें कोन बुझिबा जेमिति को भी गोटे टॉपिक न रही जाऊ सब प्रकार जिंस जेंति हमर आराम से होतबा से प्रकार जिंस हमें कोन कहबा डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स आगु को बढ़िबा आफ्टर एडमिनिस्ट्रिंग ए टेस्ट एनालाइजिंग डिफिकल्टी लेवल एंड डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स देखो ए जगह आसिला हमर difficulty level और discrimination index of each item contribute to improving test reliability validity objectivity practicality administrative age कौन डाब आंसर हमर 36 after administering a test difficulty level of discrimination मु कौन कहिबे जगह मोर कौन कहिबे जगह मोर reliability and validity की नुहा विदाउट आंसर क्वेश्चन प्रैक्टिस करंतु अच्छा चलो समेटिव असेसमेंट इज प्राइमरीली कंसीडर्ड समेटिव असेसमेंट को हमें प्राइमरीली केमिति कंसीडर करू समेटिव असेसमेंट को हमें प्राइमरीली केमिति माने ये करू समेटिव असेसमेंट माने कहले मु कोन कहिबी ऑफ लर्निंग की नुह समेटिव आसिला माने मु ऑफ लर्निंग कहिबी ना नाही आज कहला माने छाडी दियो फॉर्मेटिव आडू टिके टिके जाउची फॉर कहला माने भी फॉर्मेटिव आडू टिके टिके जाउची डायग्नोस्टिक कहला माने भी हमर कोथरे पळेबा फॉर आडे पळेबा बा फॉर्मेटिव असेसमेंट आडे पळेबा चलो आगु बढ़िबा प्रोवाइडिंग स्टूडेंट विथ फीडबैक ड्यूरिंग कथा कहला माने मु कोन कहिबी फॉर्मेटिव बा असेसमेंट फॉर लर्निंग फॉर्मेटिव बा असेसमेंट फॉर लर्निंग समेटिव कहला माने ऑफ लर्निंग कथा कहिबी देन कोन आसिला हमर समेटिव कहला माने ऑफ लर्निंग कथा कहिबी डायग्नोस्टिक कहला माने भी मु फॉर लर्निंग कथा कहिबी ओके किंबा कोन कहिबी फॉर्मेटिव कथा कहिबी ऑफ एगर कोन कहिबी समेटिव आगु बढ़िबा when student self reflection of their learning identify area of improvement गोटे पिला ता निजे को निजे कोन करूची
माने ता निजर कौन मंग को निजे धरला निजे पढ़ला निजे बढ़िला निजे निज को गढ़िला तो से जगह मु कौन कहबी आज की नुह शाबाश आगो को बढ़िबा ए टीचर यूज ए प्री टेस्ट टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट प्रायर नॉलेज कथा आसिला ए जगह रे प्रायर नॉलेज बिफोर स्टार्टिंग ए न्यू यूनिट ओके ए जगह मते दे देला स्पेसिफिकली डायग्नोस्टिक कहि देला माने मु प्रायर नॉलेज भी चेक करू जे जगह मोर ऑप्शन बी टा हबो कि नै असेसमेंट फॉर लर्निंग हबो कि नहीं जगह असेसमेंट फॉर लर्निंग गोटे पिलार मु कोन करू जी तार प्री टेस्ट करी कि तार प्रायर नॉलेज को मु चेक करू ताको आगु को नबा पूर्वरु तो सेठी मोर कोन हो जी फॉर कि नुह असेसमेंट फॉर लर्निंग स्पेसिफिकली कोन हमर डायग्नोस्टिक फॉर एमे कोन कहबा फॉर्मेटिव कथा बुझिला चलो which type of assessment is most likely to involve students setting their own learning goal कथा आसिला माने मु कोन कहबी समेटिव फॉर्मेटिव डायग्नोस्टिक ना आज ओन लर्निंग गोल कथा आसिला माने मु कोन कहबी आज कथा कहबी ना नहीं आज लर्निंग कथा कहबी ना नहीं से जगह रे देन कहला इन ए कंस्ट्रक्टिव अप्रोच टू सब्जेक्ट बेस्ड लर्निंग द टीचर रोल इज प्राइमरीली टू कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच रे सब्जेक्ट बेस्ड लर्निंग अप्रोच टू सब्जेक्ट बेस्ड लर्निंग द टीचर्स रोल इज टू टीचर रोल केमती थिबा फैसिलिटेटर गाइड ना को बळा मैम प्लीज ओटे हेल्प कर अच्छा तमे लैंग्वेज कौन चूज करिछ फास्ट कथा तमे लैंग्वेज कौन चूज करिछ सेठी सेंती किछ ऑप्शन नथिला ओके चलो कौन आंसर हमर हबो इन ए कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच सब्जेक्ट बेस्ड लर्निंग टीचर रोल कौन कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच रे कौन टा हमर लेक्चर authority figure evaluator who primarily focus on assessing learning outcome ना facilitator कौन हम आंसर हमर जो माने आंसर सी को जो टिके संगे संग ध्यान दियो पिला माने कंस्ट्रक्टिविस्ट कथा कहिला पा कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचर केमिति हबा जरूरी फैसिलिटेटर गाइड फिलोसोफर फ्रेंड ओके चलो Which of the following activities align based with a constructivist perspective in science education? आको भितर केउ एक्टिविटी बेस्ट अलाइन हेछि का सहित constructivist perspective in science education conduct an open-ended investigation, memorizing na complete worksheet with predetermined answer na listening a teacher explain scientific concept. कौन अब आंसर हमर activities aligned based with constructivist perspective. जदि ए जगह मु कहबी एक्टिव पार्टिसिपेशन कथा बा जो हमर कोन कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव कथा ताले मु कोन कहबी पिला को छाडी देबे नहीं तू जा फील्ड रे काम कर दौड़ फील्ड रे ए कथा कहबे नहीं ए जगह रे कंडक्ट इन ओपन एंडेड इन्वेस्टिगेशन टू एक्सप्लोर ए फेनोमेनन चलो आगो बढ़िबा इन ए कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम एरर आर व्यूड एज कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम रे एरर गुडा हम केमति देखु opportunity for learning and revising understanding failure indicator for student lack of effort something to be cut immediate by the teacher ठीक अछि जोटा के हमें संगे संग something to be correct immediately by the teacher ना opportunity for learning and revising understanding ए जगह रे जदी हमें टेक्निकली जिबा ताहाले हमें कोन कहिबा म्हणजे हमें टिके बुद्धि घटाई देखिबा बुद्धि घटाई देखले संगे संगे हमें कहबा हमर ऑप्शन ए हबो किंतु नॉर्मली देखले कोन हबो हां पिला भूल करा तो कोन हैला टीचर तो संगे संगे करेक्ट कर देबे समथिंग टू बी करेक्ट इमीडिएटली बाय द टीचर किंतु सेटा नुवा एटा गोटे स्कोप कोन गोटे अपॉर्चुनिटी पिला माने आगु को बढ़िबे निज नॉलेज को निजे क्रिएट करी कि एक्टिवली से माने पार्टिसिपेट करी कि आगु को बढ़िबे ओके चलो collaborative project and group discussion in subject based learning are encouraged by constructivism because they collaborative project and group discussion in subject based learning are encouraged by the constructivism because they help maintain classroom discipline, reduce the teacher's workload, provide opportunity for students share perspective and co-construct knowledge देखिला जगह ऑप्शन सीटा केते सुंदर लागुची हां कि नहीं पिला माने कौन कहला जगह रे पिला माने से कोन को प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट टू शेयर पर्सपेक्टिव कोथरे हमर ग्रुप डिस्कशन बा कोलैबोरेटिव रे पिला माने ताको निज निजर थॉट कोन करिवे शेयर करिवे जा द्वारा कि जंती बुद्धि बांटले बढ़े से प्रकार जिन सब पिला मानकर बुद्धि बढ़िबो ओके चलो सबस आगु आस कोन होला व्हिच असेसमेंट टूल इज बेस्ट सुटेड फॉर इवैल्यूएटिंग ए स्टूडेंट एबिलिटी टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक स्किल और टास्क आंको भीतर केउटा परफेक्टली एप्लीकेबल हबो कोथि पई जो हमें गोटे पिलार कोन करि परबा तार एबिलिटी को तार गोटे स्पेसिफिक स्किल और टास्क हमें कोन करि परबा चेक करि पारिबा
कौन हम आंसर हमारा परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट प्रेजेंटेशन डेमोन्स्ट्रेशन एसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन स्टैंडर्डाइज्ड एप्टीट्यूड टेस्ट जहाँ द्वारा कि गोटे पिलार एबिलिटी को हमें गोटे स्पेसिफिक स्किल और टास्क को तमें कौन करि परिबा इवालुएट करि परिबा कौन हम आंसर हमारा वेरी गुड कौन हमार आंसर परफॉर्मेंस बेस्ड टेस्ट परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट ओके चलो आगो बढ़िबा पोर्टफोलियो एज एन असेसमेंट टूल प्राइमरीली शोकेस ओके पोर्टफोलियो एज एन असेसमेंट टूल प्राइमरीली showcase a snapshot of a student current achievement level na demonstrate ba collect student work over time demonstrating growth and learning कौन अब आंसर जगह मोर संग संग पढ़ी कुआ जदि मु कहिबी पोर्टफोलियो कथा माने प्राइमरीली शोकेस त माने घरे खंडे शोकेस थिबा जादरे जोथि तमर कोन थिबा भल्लो जिंस मेंशन थिबा ओके भल्लो होला जिंस तमर अंडर मार ग्रोथ लर्निंग तमे को जगह केते मेडल पाइतो सर्टिफिकेट तमर सब माने घर कप्स गुडा क सब तमर कोठी से शोकेस भितरे सजा हेगी थिबो त जगह हमर ऑप्शन बी हला वाला लागु ना नाही पिला माने आगु को बढ़िबा रुब्रिक आर यूज्ड इन असेसमेंट टू rubrics are used in assessment to increase the speed of grading, provide clear and consistent criteria for evaluating student work, compare student performance to national norms, ensure that all students receive the same grade. कौन आंसर हवा हमारा ensure समस्त सब माने समान प्रकार ग्रेड पाइबे एटा हम रुब्रिक के कहनी compare student performance to national norms एटा हमर सीआरटी कथा कह देला जगह रे provide clear and consistent criteria evaluating student work. ओके ये जगह ऑप्शन बी हला बड़ा लागु ना नाही पिला माने सबस चलो आगु बढ़िबा द कंटीन्यूअस एस्पेक्ट ऑफ सीसी द कंटीन्यूअस एस्पेक्ट ऑफ सीसी एम्फसाइज कोन करू जी कंटीन्यूअस रो अर्थ कोन इवैल्यूएट स्टूडेंट ओनली कहला जगह रे काटी देली असेसिंग स्टूडेंट लर्निंग एंड डेवलपमेंट रेगुलरली थ्रू आउट द लर्निंग प्रोसेस एटा गोटे हला बड़ा लागु जी मते ओके बाकी आंसर तो आसार लानी ऑलरेडी छाड़